Assistant Professor, Pediatric Ophthalmology, and Chairman of the Chairperson Khyber Teaching Hospital. So please come on the stage and I'm thankful to all my seniors, my supervisor, Professor Dr. Sanaullah Jan, my supervisor in Pediatric Ophthalmology, Dr. Naeem Khan, all my senior teachers, and rest of my colleagues for inviting me to this occasion and giving me an opportunity to present on preoperative assessment and investigative protocol of congenital or pediatric cataracts. So, एक थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए. A 2-year-old girl is brought by parents with white pupillary reflex. She has a history of preterm birth. She has some cardiac issues as well and is developmentally delayed. On examination, she cannot fix and follow light. There are bilateral nuclear cataracts with microphthalmia. There is no fundus view and B scan is normal. So what is the most likely cause of her cataracts? Bilateral nuclear cataracts, preterm birth, developmentally delayed, nuclear cataracts, and microphthalmia. These are the key things in this scenario. So options मैं आपको दे देती हूँ. थोड़े से नज़दीक लिंक्ड हैं. अच्छा चले इस तरह बाय एक्सक्लूजन ही आप बता रहे. डाउन सिंड्रोम हो सकता है या नहीं? हो सकता है लेकिन इसमें डिस्मॉर्फिक फीचर्स होंगे ना आपके, तो देयर आर नो फीचर्स. लूवी सिंड्रोम, लूवी में अक्सर ग्लाकोमा होता है, ठीक है. फिर PHPV, माइक्रोफ्थल्मिक, हाँ, बट इट कैन बी बायलेटरल एज वेल. उसमें फिर इसके साथ सिस्टेमिक एसोसिएशंस होती हैं. तो बिल्कुल. और उसमें ये होता है कि आपको माइक्रोफ्थल्मिक आइज तो होती हैं लेकिन B स्कैन आपका नॉर्मल नहीं होगा. देयर विल बी अ स्टॉक अराइजिंग फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व अटैच्ड टू द this lens causing cataract. So this is excluded. Torch, possibility because there is history of preterm birth. Torch infections, all these infections can lead to premature birth. So torch. Wilson's disease, Wilson's disease जो होता है तो वो अक्सर वो भी patient they are quite ill लेकिन उनमें you get this cave rings in advanced stage of the disease. So it's torch infection, which is one of the common infection we encounter in our pediatric cataracts. So the objectives of this presentation is to evaluate pediatric cataracts. And in Wilson's disease, it's sunflower cataract or Christmas tree cataract? Sunflower. Sunflower cataract. Identify different types of pediatric cataracts and assess their visual significance and plan investigations accordingly. So all newborn infants should have a screening eye examination by their primary care provider, including an evaluation of the red reflex. And retinoscopy should be performed through an undilated pupil if there is any axial opacity to assess its visual significance. If it's in the axis, it's involving, it's more posterior, it's bigger in size, there is no view of the fundus through which you can go for retinoscopy or ophthalmoscopy, then it tells you that it's visually significant and treatment is recommended. So when evaluating child with pediatric cataract, apart from the presentation which Dr. Raheel has presented very nicely, you should have an idea of the growth and development of the child, any problem before birth in the antenatal period, such as any infections, maternal drug use such as corticosteroids, any problem during delivery such as birth trauma, and problems in the postnatal life. Systemic disorders should also be sought out and pediatricians should be consulted. Family history is very important. You should examine the immediate family members because sometimes the immediate family members, such as parents, they have milder opacities. For example, in Nancy Horn syndrome, you get a posterior sutural cataract in the female mother carrier.
are in this Lewy syndrome, you find early lenticular opacities in the mother, which shows their carrier state. So the immediate carrier family member, they should be examined for any lenticular opacity which are not visually significant in them, but they have transmitted it to their child, and it has become visually significant. Same as with Weil-Marchesani syndrome. Yeah, Weil-Marchesani, it's mainly causes ectopia lentis, No, and it as also microspherophakia. Yes, Yeah. but it can also cause cataract. Bas, bilkul, bilkul. It can. And it's a familial disease. Yeah. It can be an autosomal recessive or autosomal dominant. जी अच्छा slit lamp examination should be performed of the pediatric patient, whatever position you go for, either in the flying position, in the lying position with the handheld slit lamp. If it's not possible, you can go for sedated examination, and you need general anesthesia. I always try to avoid general anesthesia preoperatively until I'm going for intraocular lens implantation, for which I go for UA plus intraocular lens power calculation. I go for keratometry and axial length calculation under general anesthesia. But if the child is a bit bigger, 4 years, 5 years, then I go for it without anesthesia. Sometimes sedation works very well. I always try sedation first, followed by general anesthesia. So anterior segment should be examined for any anterior segment abnormalities. Visual function assessment is very important. You have to assess the visual function, whether the cataract is visually significant or not. If it's visually significant, then obviously surgical treatment is required. Lens position should be examined, as Ma'am Sadia mentioned, because there can be any subluxation. Cataract morphology, it tells about the etiology of the cataract. So morphology should be studied. For the juniors, how you check visual acuity in OPD, visual function of a small child with pediatric cataracts? वो आ गया है Yes, sir, अच्छा पूछ ठीक लेते हैं, आपने visual function study? Anyone? Lia pedals. What else? How many of you have seen Lia pedals? Raise your hands. Raise your hands. किसी ने Lia pedals देखे? सिर्फ नूर ने देखे? शाबाश. चलें आगे. You must examine posterior segment of the eye if the view allows, to exclude at least any posterior segment abnormality, optic nerve, macular fovea abnormality. But if the view doesn't allow you, then you go for a B scan, which gives idea of the gross idea of the retina. It gives you the gross abnormality. But the true picture of the disc and the macula can be assessed once the cataract is removed. Intraocular pressure should be checked as well. So, assessment of visual function. Which technique you use to check the intraocular pressure? I use the Perkins tonometer. You have it. An important thing, which anesthetic agent can reduce the intraocular pressure? Anyone who knows? Yeah, all general anesthetics, they reduce the intraocular pressure. So it's better to go for intraocular pressure check under sedation. So when in my glaucoma patient, I always check the pressure under sedation rather Which than sedation you use? I chloral hydrate sedate syrup. So fixation reflex may not be fully developed in a child less than 2 months of age. So if you see a 2 months old child and the child is not fixating, it does not necessarily tells you that the vision is reduced, because it can be reduced, it is absent, or you may not measure it in a very young child before 2 months of age. So you should keep it in mind. So the Just wait a indicator. minute, go to the back side. It is very important practically. What I do practice in my clinic to check the visual function of the child, I ask them to turn off the lights and shine the torch in different directions. If the child maybe is following the light, I think that he has some visual potential. Second is the Lia gauging. By visually evoked potential, you can also have the idea of the visual pathway. Thank you. And at different ages, there are different tests which are used to check visual acuity. In our Khyber teaching
hospital we are using LIA charts. So what are the indicators which tell you that cataract is not visually significant? It's if the cataract is less than 3 millimeter in diameter, if it's peripheral or paracentral, if there is blue dot cataract, there is a good red reflex through which you can perform direct ophthalmoscopy and retinoscopy, and if there is no strabismus or nystagmus, then you can tell that the cataract is not visually significant. And reverse is true for visually significant cataract. I have put this slide just to enhance और कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा just for revision कि the cataract is visually significant if it's involved the central visual axis, if it's 3 millimeter or greater than it, if it's posteriorly located, if there are no clear zones between the cataract or the different parts of the cataract, and retinal details are not visible, and there is associated nystagmus in case of bilateral cataract and strabismus in case of unilateral cataract. So, how to assess the visual function in children who are older than 2 months of age? The previous one was for less than 2 months of age. Now it's for older children more than 2 months of age. So, objection to occlusion. If you occlude one eye and the child is objecting that occlusion, it means vision in the other eye is क्या होगी? अगर वो यहाँ पे occlusion को वो कर रहा है, तो इस eye में vision क्या होगी? अच्छी होगी. That's why he is objecting the occlusion. Fixation behavior, whether वो एक ही टाइम जो है तो whether it's central, steady or maintained. ठीक है, मैं आपको आगे बता दूँगी. And fixation preference, whether वो हर टाइम एक ही आंख से fixate करता है या fixation alternates between the two eyes. If it's alternating between the two eyes, means vision in the two eyes is equal. If it's not, then mean there is asymmetric visual acuity and there may be amblyopia. This preferential looking test is LIA ratings ना. इसमें ये होता है कि दो pedals होते हैं. On one pedal there is a gray area and on the second there are black and white lines. So we see the child which is focusing on that because the children mind is used to different colors. This is the LIA rating and this is preferential looking test. We are very lucky to have visually evoked potential in KGH. It's just available in KGH. So you people are requested to refer the patients to KTH for visually evoked potentials. In child behavior, patients should be asked to assess the behavior of the child at home. And other tests are preferential looking tests and visual evoked potentials. Younger children in 2 to 4 months, you can also do okay. Yeah. Optokinetic nystagmus, yes. Yeah, there are different. Yeah, there are a lot of tests. Yeah. Sometimes But it is because very important. fixation is not developed even at 2 months, so here preferential looking is a bit difficult for Yeah. to perform on them. Even in KTH, our orthoptic room, this test is available. The optokinetic nystagmus drum. So this is a patient with binocular fixation pattern. We can see the examiner is putting hand on this better eye, and he is occluding. He is resisting this occlusion. Mean vision in this eye is good and vision in this eye is bad. That's why he is objecting it. And while occluding the right eye, he is happy. He is happily looking at the target. Means vision in this eye is good. But it's not the same case all the time. The child may object to occlusion anyway. So you cannot rule out कि जी बस patient की vision जो दोनों में equal है या इस तरह. वो कोई भी आप eye occlude करोगे तो he will object. So in the central steady and maintained method, it's a very common misconception that central or steady it is checked binocularly. No, central and steady are the uniocular phenomena. First of all, you bring the आप उसके जो टारगेट होता है पेशेंट के एक 40 सेंटीमीटर यू ब्रिंग अ टारगेट और आप जो है तो एक आई अक्लूड करते हैं एंड यू सी द कॉर्नियल रिफ्लेक्स. आप देखते हो कि वेदर द corneal light reflex is central or is it eccentric. If it's central, it is called as central. If it's eccentric, then we call it as uncentral. All the terminology is a bit very अजीब सी लगती है uncentral, लेकिन this is called as uncentral. And steady, again आप वही आपने अक्लूड रखा होगा और you see कि corneal light reflex central है uncentral है और जो है तो is there any nystagmoid movement, कोई movement तो आंख ही नहीं हो रही. इवन आप टारगेट को थोड़ा सा मूव राउंड अबाउट भी कर सकते हैं कि वो फॉलोअर्स को कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. और वंस यू रिमूव द कवर
तो आप फिर आप उसका मेंटेन्ड जो आपका उसका कंपोनेंट है, यू चेक द मेंटेन्ड कंपोनेंट कि वेदर फिक्सेशन उसी आई में जो आपने इसमें मेंटेन्ड है या फिक्सेशन स्विचेस टू द अदर आई, ठीक है। तो आप उसको अनमेंटेन्ड कहोगे, अनस्टेडी, अनसेंट्रल एंड अनमेंटेन्ड. So these any eye that does not maintain fixation may be presumed to have a lower visual acuity than the opposite eye, and it's easier to identify in a patient with strabismus than in one without this defect. If the patient doesn't have strabismus, then we have to go for induced tropia test. ठीक है, ये तो वही just for repetition. Unicularly in a child, happy What child. is induced tropia test? वो I'm going through that. ठीक है. फॉर चिल्ड्रन विदाउट स्ट्रेबिसमस आप फिर स्मॉल जो आप 10 to 20 प्रिज्म डायोप्टर टेस्ट करते हो, दिस इज इंड्यूस्ड ट्रोपिया टेस्ट. और उसमें आप यू पुट 10 to 20 प्रिज्म डायोप्टर इन फ्रंट ऑफ वन आई. तो ये आई जो है तो मूव, इट विल मूव अप. इफ़ दिस आई इज़ मूविंग अप तो दूसरी आई भी इट विल मूव अप. तो इसका क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हेयरिंग ला ये भी इसको फॉलो कर रहा है. तो दिस आई इज़ द आई विच इज़ फिक्सेटिंग विथ प्रिजम्स. ये मूव कर गई, ये मूव कर गई, ठीक है. अब जब यहाँ पे आपने प्रिज्म रखा है, इसमें भी इस आई ने मूव किया और अकॉर्डिंग टू हेयरिंग ला इस आई ने भी मूव किया, ठीक है. तो कोई प्रेफरेंस कोई फिक्सेशन प्रेफरेंस नहीं है. लेकिन अगर आपने इस आई पे रखा, ठीक है, ये आई मूव करती है, जब आप इस पे प्रिज्म रखते हो तो देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ ईदर आई. तो इसका मतलब है कि पेशेंट कॉन्सिस्टेंटली इसी आई से फिक्सेट कर रहा है, एंड ही देयर इज़ amblyopia in this eye, or he is not fixating with this eye, or having poor fixation. Corrective movements कब? Prism रखने से बिल्कुल होती है. वो जो आप कह रहे हैं ना, वो 4 base out prism test ये बिल्कुल होती है. ईशा डॉक्टर साहब आगे बता देंगे. इसमें भी होती है. इसमें कि अकॉर्डिंग टू हेयरिंग ला, क्योंकि उससे आपने मूव किया है तो उसने भी मूव किया है. आप ही बता दें, फिर मैं आपको बताती हूँ. पूरा बता दें फिर एक्सप्लेन करती हूँ. नहीं ठीक है, मैं ख्याल बता दे. It's not what we included. generally do and what I have seen when I was doing my fellowship at Ludwig Maximilian University, they were using 4 base out prism test, in which what you are saying, and this test, yes, which is more common, and this test is also used to detect what thing? आप बताएं. आपने ऊपर What is it? microtropia, and also if there is central scotoma or not. ठीक है, this is important. And I don't think this test you will learn by picture. It's a practical test. चलिए. एक बात तो ये इसमें आप एम्ब्लियोपिया डिटेक्ट नहीं कर सकते. हाँ. एक फिक्सेशन प्रेफरेंस. क्यों आप डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इसलिए कि जो फ्यूजनल एम्प्ली जो दूसरे जो आपने बताया 10, तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ना, वो 20% तक जो कन्वर्जेंट फ्यूजन एम्पलीट्यूड होते हैं, तो उसके ऊपर आप इंड्यूस नहीं कर सकते कि बोथ आई. तो दिस इज जस्ट शिफ्टिंग. जो इंड्यूस आप करते हैं वो बोथ आईज को आप करते हैं, जो स्टूडेंट आप बता रहे हैं. दूसरी जो आप अनसाइंटिफिक के जैसे बेसिकली एक्साइटिंग नहीं, वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, लेकिन दिस इज अमेरिकन एकेडमी टर्मिनोलॉजी के अनसेंट्रल, अनस्टेडी एंड अनमेंटेन्ड. वो बड़ा मुझे भी बड़ा अजीब सा पहले लगा जब व्हेन आई हर्ड अबाउट इट. लेकिन जी. So if the child consistently fixates with the same eye, the opposite eye likely has decreased vision. ये तो एक रफ आइडिया है कि सेंट्रल स्टडी मेंटेन विजन से आपकी अगर होगा तो 6 to 6 होगा, अनसेंट्रल होगा तो 660 आवर्स, अनस्टडी से भी अराउंड अबाउट 660 आवर्स होगा, और अगर अनमेंटेन्ड है तो वो भी, यानी इट इंडिकेट्स कि अगर आपका अनसेंट्रल है, अनस्टडी और अनमेंटेन्ड है तो विजन इज पुअर. वो फिर आपके जो है ना कि विजुअल एवोक पोटेंशियल और प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट है, दोनों से जो है आपके डिफरेंट. ये एक बात रखो, अगर आप ये टेस्ट देखें तो उसमें सेक्स वर्सेस ज़्यादा विजुअल एक्यूटी है नहीं. इसी के जिसमें सीएसएम और प्रेफरेंशियल लुकिंग होती है ना, वेदर 1 ईयर तक बिलो 1 तो उसमें सेक्स वर्सेस हो जाते विजन नहीं होते, तो सेक्स से वजह से हो जाते. उसकी टू गिवन भी 6 तक होती है. तो इसलिए ये 6 और 6 जो 6 में है काज में, लेकिन ये गलत है. जो बिलो 1 6 12 से विजन बेटर नहीं होती. This is for older children as well. You can have fun. 2-3 साल के बच्चे की अगर आप कर रहे हो तो फिर they can be 6. ये जो आपके अभी मेरी आगे स्लाइड आएगी, जो आपकी विजुअल एवोक पोटेंशियल है, तो उसमें 6 विजन इज अटेन्ड एट द एज ऑफ 6 to 7 months.
लेकिन जो प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट है बिकॉज इट रिक्वायर हायर कॉर्टिकल प्रोसेसिंग, उसमें ब्रेन का काफ़ी वो है, तो इट्स उसमें 5 to 6 ईयर्स में आपकी वो विजुअल एक्यूटी रीच होती है। आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सर, इसलिए कि आप 50 सेंटीमीटर में अगर ये आप नोट करते हैं, अगर एक पेशेंट 2 डायप्टर मायोप है तो 50 सेंटीमीटर पे उसकी विजुअल एक्यूटी नॉर्मल होगी, बट यू कैन नॉट से दिस इज 6x, इसलिए कि 6x तब होगी जब 6 मीटर पे वो नॉर्मल होगी, तो यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस into 6x। ठीक है सर। परेशान हम आपको नहीं बीच कर सकते, हम तो मानते हैं डायप्टर मायोप की रियल विजुअल एक्यूटी 50 सेंटीमीटर पे 6x, बट इट डजंट मीन ही इज 6। ठीक है सर। 6 मीटर पे वो बहुत कम होगी। ये तो फिर बड़ी आगे बात ये है कि डरना नहीं। जी बिल्कुल। चलिए प्लीज प्रोसीड। अच्छा, फिर आपका जो है तो प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट, दिस इज टेलर इक्विटी 2 कार्ड्स, इसमें यू आर हैविंग दिस बोर्ड, एक टाइम साइड पे देयर आर ग्रेटिंग्स, यहाँ पे ब्लैंक है, देयर इज अ स्मॉल होल लेकिन इसमें आपको विजिबल नहीं है, और चाइल्ड इज एट 40 सेंटीमीटर। वो पेशेंट जहाँ पे देखता है बच्चा, वेदर ही प्रेफर्स द ग्रीटिंग्स आर दिस ब्लैंक एरिया, एंड एग्जामिनर इज ऑब्जर्विंग अ होल इन दिस बोर्ड कि वो किस साइड पे देख रहा है, और इस बोर्ड में एक अपनी वैल्यूज़ होती हैं कि दिस इज़ दिस लेवल ऑफ विजुअल एक्विटी दिस। तो व्हेन आई वाज इन सिंगापुर तो दे वर दिस यूजिंग दिस टेलर एक्विटी 2 कार्ड्स फॉर चेकिंग विजुअल एक्विटी, और इन्फेंट्स का वो चेक करते थे। So, with preferential looking test, आपका visual acuity of a newborn is 20 by 600 or less than 6 by 120. At 3 months, it's 6 by 36, and at 6 months, it's 618, and at 5 to 6 years, it becomes 66. और आपका in contrast to visual evoked potential, आपका visual acuity जो है in newborn is 6 by 120, and it is reached to 6 level at 6 to 7 months of age. So, वही जो मैंने बताया कि जो आपके प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट है तो इसमें हायर कॉर्टिकल प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है, ठीक है, तो वो इसलिए उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो लेट होती है, और जो विजुअल वो पोटेंशियल है तो इसमें आपकी 6 पे उसके लिए हायर कॉर्टिकल फंक्शन रिक्वायर नहीं होता, वो जस्ट आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, तो दैट्स वाई विजुअल एक्टिविटी ऑफ 6 इज रीच्ड एट 6 to 7 months ऑफ एज। अच्छा, फिर जो ओल्डर चिल्ड्रन है तो आप उसमें जिनमें स्पेशली लेमिलर या पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है, यू कैन गो फॉर अ ग्लेयर टेस्टिंग, एंड टेस्ट अगर आपको यू वांट टू असेस के ये कैटरेक्ट जो हैं तो इतने या अभी इनिशियली इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो आप टाइम टू टाइम उनका वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट करो, इट्स फॉर अ बिट जो बड़े पेशेंट होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, और या फिर स्टीरियो एक्विटी करो, तो इफ़ देयर इज़ प्रोग्रेशन ऑफ द कैटरेक्ट या स्टीरियो एक्विटी उनकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तो मीन्स कैटरेक्ट से विजुअल सिग्निफिकेंस का हैज़ रीच टू विजुअल सिग्निफिकेंट लेवल, और उससे और बिग चिल्ड्रन में यू कैन गो फॉर एलन कार्ड्स, ई गेम एंड स्नेलन विजुअल एक्विटी। For the trainees, what are the different stereo acuity tests used? बताएं आप। Leg 1, leg 2, frisbee. काशिफ सही बता रहे हैं। सही है, very good. ठीक है, तो आपने एक विजुअल फंक्शन असेस किया, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में अपार्ट फ्रॉम अदर आपने कॉर्निया, आइरिस, लेंस में फिर आप यूज लुक इट्स मॉर्फोलॉजी, बिकॉज द मॉर्फोलॉजी पॉइंट्स टूवर्ड्स द एटियोलॉजी। सो इंटीरियर पोलर कैटरेक्ट्स, ये खैर एक कोई Sorry. And what about Begolinis? Begolinis क्या होता है? नहीं, और चले ये पढ़े फिर आप डिस्कस बाद में आइंदा कभी करेंगे, चले। इंटीरियर पोलर कैटरेक्ट्स इसकी सिग्निफिकेंस। सॉरी जी, बीच में मैं थोड़ा, अगर किसी के जहन में कोई कमेंट है या डिस्कशन करना तो कीप इट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, बीच में बार-बार इंटरप्शन प्रॉब्लम सारा हो, तो अगर आप भूलने की किसी को वो है तो आपके साथ मोबाइल में पॉइंट ले, सही है। नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, लेकिन बीच में प्रेजेंटेशन को बार-बार इंटीरियर पोलर नहीं, कैटरेक्ट्स। sorry Sanola, I'm so really sorry. See, you also have done, but you are the pioneer to do CHPE course, na? In which Brenda Jamil was repeatedly asking us that the modern methods of any teaching is to have interactive session throughout. If we leave it to the presenter, that is who is talking, and later on your comments are Yes, welcome, everybody can give their input, but Yes. interrupting the speaker Okay. after every minute is Okay. So interior polar cataracts, they are usually sporadic,
but their significance, if they are unilateral, they cause significant anisometropia. So careful refraction and repeated refraction is necessary to prevent any amblyopia. And anterior pyramidal cataract, is the name indicates, is a pyramidal shaped cataract, which is a type of anterior polar cataract, and it is projecting into the anterior chamber. So it's the more severe form of anterior polar cataract. These anterior polar cataracts are on the anterior capsule, so they are not visually significant. This is the infantile nuclear cataracts. They are usually 3 millimeter in diameter, but the density and size can vary. They may be inherited, they may be sporadic, and they are usually commonly bilateral. And these eyes, जो आपके जो nuclear cataracts होते हैं, they are usually smaller eyes, microphthalmic eyes. इसके बारे में इवन ये भी कहा जाता है कि अगर ये पेशेंट इनको डायबिटीज़ होता है तो दे हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलपमेंट इनमें होती है, द पेशेंट्स हु हैव न्यूक्लियर कैटरेक्ट्स later in their life. So lamellar cataract, they are autosomal dominant, they can be present in isolation, they are associated with metabolic disorders and intrauterine infections. You can see there is a clear nucleus, then it is surrounded by a lamella of cataract. Again, it is surrounded by a clear cortex. So these cataracts are usually visually not significant. These patients, they present quite later, and as these cataracts, they develop later when the fixation behavior has developed. So there is less amblyopia, and the visual prognosis is also good. Posterior lenticonus, as the name indicates, there is a conical projection of the posterior capsule into the vitreous cavity, and there is a thinning, there is progressive thinning, and this posterior defect, it can it can develop a defect here, and then rapid opacification of the lens can occur. I have seen many cases of posterior lenticonus, and they are usually identify it during surgery कि आपका इसमें बड़ा very आपका swinging सा posterior capsule होता है और उस पर अक्सर छोटे छोटे dots होते हैं, और sometimes we may see the defect in the posterior capsule. इनिशियली आपका ऑयल ड्रॉपलेट का रिफ्लेक्स देता है, लेकिन जब इसमें जब डिफेक्ट होता है तो इट गिव राइज टू टोटल ओपेसिफिकेशन. तो टोटल ओपेसिफिकेशन जब आपकी हो जाए तो यू कांट से के वेदर दिस इज पोस्टीरियर लेंटिगोनस या नहीं. और पोस्टीरियर लेंटिग्लोबस का जब आपकी इंटायर पोस्टीरियर कैप्सूल की थिनिंग होती है तो दिस इज पोस्टीरियर लेंटिग्लोबस. पोस्टीरियर कैप्सूल सब कैप्सूलर कैटरेक्ट्स ये जो है तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में तो इतने कॉमन नहीं है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद यूआइटिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज, रेडिएशन एक्सपोजर एंड ट्रॉमा. एंड हाँ, आपके जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस पेशेंट्स होते हैं टाइप 2, तो उनकी अक्सर ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है. दे कम टू यू एंड यू डायग्नोज देम. आई हैव अ पेशेंट जिसका डिक्रीज विजन के साथ हमारे पास आई थी, और उसके पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट्स थे. जब व्हेन आई आस्क तो उनकी हेयरिंग लॉस और उसकी हिस्ट्री थी, और दे हैव फैमिली हिस्ट्री, उनकी एक काफ़ी हिस्ट्री थी, ब्रेन ट्यूमर्स की हिस्ट्री थी. तो देयर वाज एक फैमिली, एक पूरा वो था, एक ट्री था जिसमें सबको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 था. So sectoral cataract, you can see the cataract is involving a sector of the eye, of the lens. So posterior segment must be examined for any posterior segment pathology like tumor especially, and it can be associated with trauma as well. Peripheral vacuolar cataracts, they are asymptomatic peripheral lens vacuoles, and we see in premature infants. When we are doing screening for retinopathy of prematurity, we do see these small vacuolar cataracts, but they are not visually significant, they resolve with time. Persistent fetal vasculature, previously it was called as persistent hyperplastic primary vitreous, but nowadays it is called as persistent fetal vasculature. It is a unilateral cataract. There is usually a microphthalmic eye, and you can see over here, ये आपको जो एक बैंड सा नज़र आ रहा है, it's attached to the posterior lens capsule, और इसकी पीछे जो attachment होगी तो it will be to the optic disc. तो वो distortion करता है of the जो आपका optic disc है vasculature है, उसको distortion करता है. ये एडवांस स्टेज में है. मैं एक दूसरी पिक्चर होगी इसकी, एक सेकेंड. यहाँ पे persistent fetal vasculature का एक स्पेक्ट्रम है. Here you can see a small posterior capsular opacity. यहाँ पे आपका एक, इसको हम मिटन डॉट कहते हैं, यहाँ पे इसको बर्मिक्स्टर पैपेला. जब आपका एक फाइब्रल वेस्कुलर स्ट्रैंड है विच इज एमनेटिंग फ्रॉम द डिस्क, यहाँ पे एक थिक ब्रॉड बैंड है
जो मोस्ट प्रोबली अटैच है टू द लेंस. ये एक सिवियर फॉर्म है ऑफ PHPV जिसमें आप यू कैन सी द elongated ciliary process which is attached to the lens capsule. And this is the B skin of this eye जहाँ पे आपका you can see this thick fibrous band which is attached to the posterior lens capsule. So retinoblastoma may be a part of the initial differential diagnosis of persistent fetal vasculature because of leukocoria. लेकिन retinoblastoma आपका small eyes में नहीं होता. Usually the eyes are big और जो आपका retinoblastoma में cataract unlikely होता है. ठीक है, तो फिर आप इस चीज़ से exclude कर सकते हो. Different selected कुछ pediatric cataracts हैं जिस तरह spoke like cataracts. It occur in Fabry's disease and monocytosis. Vacuolar can occur in diabetes, multiflecked color in hypoparathyroidism and myotonic dystrophy, green sunflower in Wilson disease, and thin disciform in Lewy syndrome. Whenever you see a child with cataract and there is a congenital cataract, glaucoma, and developmental delay, investigate for Lewy syndrome. So workup, unilateral cataracts are usually not associated with systemic disease, so laboratory tests are therefore not warranted in these cases. In contrast, bilateral cases, they are mostly associated with systemic diseases and workup should be done. If there is positive family history of isolated congenital or childhood cataract, isolated congenital or childhood cataract, or if examination of the parents show lens opacities and there are no associated systemic disease to explain their cataracts, then systemic evaluation and laboratory tests are not necessary. It's not necessary to go for investigation in all patients with congenital cataract. There are some baseline investigations which you must do in all patients with congenital cataract, but rest of the investigation, it should be discussed with the pediatrician and should be advised accordingly. So, this is the last slides. So, laboratory studies to consider for bilateral cataracts of unknown etiology are disorders of galactose metabolism, that is urine flow reducing substances is done, infectious serology such as torch, varicella, and VDRL test, metabolic diseases such as for Lewy we go for urinary amino acids, serum calcium, phosphorus, but the patient with who have serum calcium and phosphorus abnormalities, they are usually very ill. तो अगर क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में फिर जब ये कैटरेक्ट्स होते हैं तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है कि वो दे आर नॉट वेरी वेल. ग्लूकोज हाई इन डायबिटीज़ एंड फेरिटीन हाई इन हाइपरफेरिटीनीमिया. So an evaluation, if you see any dysmorphic features, refer the patient to geneticist if it's available, because geneticist will counsel the patient regarding the recurrence risk in other siblings. And next generation genome sequencing should be done, which analyze the whole of the genome. So the take home message is to visual significance of cataract should be assessed before planning treatment, and morphology of the cataract provides information about the etiology. Okay? So, or not, it's one important thing, not all cataracts require surgery. ठीक है, if you see a cataract तो आपने visual significance ज़रूर चेक करनी है और फिर आपने उसको further follow करना है with Warford test, stereoacuity आप उसकी करोगे और जो है तो आप you look कि whether the cataract is progressing और visual deterioration हो रही है. Thank you. One question. So now we are allowed. Thank you very much. It was very extensive review, very good insight. Actually, is there any standard protocol which you have, I mean, investigation? आपके जो varicella titers है ये you have to do in all patient. मैंने लिखा भी of unknown etiology आपका patient, because the patient initially can be normal, उसको कोई आप जब का जब patient 2-3 महीने का आता है तो उसको कोई systemic problem नहीं होते, लेकिन they can develop it later on. So these are the investigation which should be done in all patient. Serum calcium loss. Just have an opinion Yeah. from Dr. Sumaira and Dr. Naeem. What is Nazli, because you see जो हमारी population है the kind we are dealing with usually, so they are normally जो हमारे पास patients आ रहे हैं, they're not very affording patients, and all of these investigations they are expensive tests, and many times when you go for them you don't find any positive outcome unless and until you have some clinical signs and you go for a targeted approach, right? So in the West it is done like that, but in
okay, if there is microphthalmia, yes, go for torch. If there is, this all droplet cataract, you find that if there is failure to try, yes, go for low key investigation, like you said earlier. But we do not investigate cataract, pediatric cataract, especially अगर उसकी family history मौजूद है, especially if there is no systemic issues, or especially if the child is thriving and otherwise healthy. So we do not go for any investigations. But yes, like I said, you consult a pediatrician and you make sure that the child is healthy. Yeah. Not because how can you tell that the child is healthy? अब आपको एक detailed history चाहिए, आपको examination चाहिए, see, and if at all you feel that there is something systemically wrong, or the growth is not what it should have been at that age, according to the pediatrician, and you consult with the pediatrician and then investigate. So वो obviously आपने उसको GA देना है और आपके pediatrician in any case उसको देखना है. आपका जो concern है, आप you write it down and refer the patient. So that's what we do. अच्छा. So we do not investigate everything. What I do is general anesthesia, वो तो आपकी फिटनेस के है. मैं जनरल एनेस्थीसिया क्योंकि आई डोंट वांट टू डिले द सर्जरी वो कर लेती हूँ एंड आई एडवांस दीज इन्वेस्टिगेशन. आई ऑलवेज डू दीज इन्वेस्टिगेशन. सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस में नहीं लिखती, लेकिन फेरिटीन भी नहीं लिखती, कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, urine fluoridesic substances, torch and surface allergy. Because I have seen patients, स्पेशली मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. एक पेशेंट का जी कोई माइक्रोफ्थेल्मिया कुछ नहीं था एंड आई डिड द टॉर्च सीरोलॉजी. उसके सारी जो इन्फेक्शन, रुबेला तो था ही पॉजिटिव, उसके 2-3 और भी पॉजिटिव थे. जब हमने उसका इको कराया, ही हैज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप सिस्टेमिकली ही इज़ वेरी फाइन, उसको कुछ इशू नहीं था. तो and we refer, I always refer these patients to ENT specialist for hearing evaluation. So I do these investigations. Can Sir Mohammed give his expert comments? What he practices? Well, I think I agree with Sumera that not that every patient is going to be investigated. So the routine investigations which we carry out in our department, that is just the urine examination, blood compete, and X-ray chest, hemoglobin. And especially important is to refer these patients to the anesthetist regarding fitness of anesthesia. वो तो ज़रूर एनेस्थीसिया फिटनेस, वो तो regarding the anesthesia fitness, not the cause etiology of cataracts. So what I can conclude from all this discussion, that there is protocol which is as usual from the Western countries, and then they are practicing. But we have to, acclimatize to our own circumstances, and so the cost effectivity of going for all these investigation is not probably viable option. That's why if you admit patient with bilateral cataract, and if there is no family history, the first thing you have to do is to ask the pediatrician about if there is any other sign which you can relate to some pathology, and if there is something from there, then you will investigate regarding. This is what. Thank you very much. Thank you.